Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good and your studies are going smoothly. So, this is set third of modern history जिसमें हमने परसों से स्टार्ट किया है. सेट वन एंड सेट टू अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना के हैं हमारी यूट्यूब चैनल पे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर वन फॉर टुडे सेशन इज द टाइटल पंजाब केसरी वॉज कन्फर्ड ऑन. टाइटल पंजाब केसरी किसको दिया गया था? सरदार बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, रंजीत सिंह. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. Lala Lajpat Rai was one of the foremost leaders who fought against British rule in India. He was popularly known as Punjab Kesari, जिसका मतलब होता है Lion of the Punjab. Got it? Okay. Moving to another question. एंड यस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर स्कोर बताना था किसका कितना हुआ आउट ऑफ 25. महात्मा गांधी's first attempt at leading an all India struggle was his call for a satyagraha against which of the following? Rollout Act, the Public Safety Bill, the Trade Disputes Act, the Government of India Act 1919. And yes, the right answer is shabash. Very good. Option A. Mahatma Gandhi's first attempt at leading an all India struggle was his call for a satyagraha against Rollout Act. Rollout Satyagraha organized by Mahatma Gandhi led to the first all India struggle against the British government. Got it? Okay. In March 1925, who of the following was elected as the president of the Central Legislative Assembly? Madan Mohan Malviya, C.R. Das, Vithal Bhai Patel, Motilal Nehru. And yes, the right answer is in March 1925, who of the following was elected as the president of Central Legislative Assembly? And the right answer is option C. Vithalbhai Patel. Vallabhai Patel hoga. He was elected President Speaker of the Central Legislative Assembly in 1925. Patel was an Indian legislator and political leader, co-founder of the Swaraj Party and elder brother of Sardar Patel. अच्छा, Vithalbhai Patel ये जो है एल्डर ब्रदर था सरदार पटेल का. ओके, गॉट इट. महात्मा, दिस क्वेश्चन आई विल चेक, मैं इसको चेक करूंगी. विठल भाई पटेल का इन्हीं को किया गया था इलेक्टेड स्पीकर ऑफ सेंट्रल एशिया असेंबली या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? ठीक है, गॉट इट. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया लिविंग साउथ अफ्रीका फॉर एवर इन 1919, 1916, 1915, 1914. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. भारतीय प्रवासी दिवस उस दिन हम मनाते हैं. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915. आफ्टर रिटर्निंग, गांधी ट्रैवल्ड द लेंथ्स ऑफ द कंट्री टू अंडरस्टैंड द पीपल बेटर एंड आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ लोकल सत्याग्रहs. गॉट इट? अनदर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. Who among the following attended all the three round table conferences? B.R. Ambedkar, Mahatma Gandhi, Annie Besant, Madan Mohan Malviya. And yes, the right answer is option A. All three roundtable conferences were attended by Dr. B.R. Ambedkar and Tej Bahadur Sapru. The most important feature of the Government of India Act 1919 was the introduction of adult franchise, separate electorate, provincial autonomy, diarchy. एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, ये आया था ऑन द बेस ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ मोंटेगू चमल्सफर्ड रिफॉर्म्स. एंड यस, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था? इसने डायरकी इंट्रोड्यूस किया था और प्रोविंसेस में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड ऑन द बेस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ मोंटेगू रिफॉर्म्स. इट इंट्रोड्यूस प्रोविजनल गवर्नमेंट डायरकी. प्रोविजनल गवर्नमेंट पे प्रोविंसेस में इन्हें डायरकी मतलब होता है रूल ऑफ टू. गॉट इट? The Champaran Satyagraha was started by Mahatma Gandhi in the year. किस साल में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया? 1950, 1970, 1919, 1930. कल भी हमने इन क्वेश्चंस टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस किए. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. 1917 में इन्होंने ये स्टार्ट किया. 1915 में वापस आई थी. 1917 में चंपारण सत्याग्रह. 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेदा सत्याग्रह. फिर 1919 में रोलाट एक्ट के खिलाफ, राइट? The Champaran Satyagraha of 1917 was the first satyagraha movement led by Mahatma Gandhi in India,
and is considered a historically important revolt in the Indian independence movement. Moving to another question. The first woman president of the Indian National Congress was Annie Besant, Sarojini Naidu, Vijaya Lakshmi Pandit, Kasturba Gandhi. पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं. क्यों? इसलिए क्योंकि पहली वुमेन जो थी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो थी एनी बेसेंट. ठीक है. अब अगर यहाँ पे लिखा होता है फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली हिंदुस्तानी खातून, तो फिर सरोजनी नायडू थी. बिकॉज एज यू नो एनी बेसेंट वो इरिश लेडी थी, वो यहाँ की नहीं थी. तो फर्स्ट वुमेन अगर खाली होगा तो एनी बेसेंट. अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात होगी तो Sarojini Naidu. Got it? Okay. So first woman president of Indian National Congress was Annie Besant. और कब भी बनी president Indian National Congress की? 1917 में. Got it? 1917 में. Sarojini Naidu was the first Indian president of Indian National Congress in 1925. तो Sarojini Naidu किस सेशन में थी? 1925 वाले सेशन में president बनी, और Annie Besant जो है वो 1917 वाले सेशन में president बनी Indian National Congress की. Got it? Okay. Who was the founder of Muslim League in India? मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन था इंडिया में? नवाबुल समीउल्लाह, एम.ए. जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, नन ऑफ द अबव. So who was the founder of Muslim League? मुस्लिम लीग कब बनी थी? Who was the founder of Muslim League in India? And the option B, Muhammad Ali Jinnah was the founder of Muslim League in India. Ram Prasad Bismil was associated with Kanpur conspiracy case, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर बॉम्ब केस, ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस. राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड थे? एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. Ram Prasad Bismil was associated with Kakori conspiracy case. Ram Prasad Bismil was famous freedom fighter who was involved in historic Kakori train robbery. जब उन्हें ट्रेन के डब्बे से पैसे चुराए थे so that कि वो फिर सपोर्ट करे, गन्स वन्स में पैसे खर्च करे. It was political robbery and the incident took place at the small town Kakori. The incident of Kakori was conspired because they needed money for revolutionary act against the British atrocities. Got it? Okay. The Chori Chora incident during non-cooperation movement relates to. चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रही थी उस टाइम पे हुआ था. A major offensive by underground revolutionaries, massive police firing on unarmed satyagrahis, the burning of a police post by a mob, large scale looting of government property by Congress workers. Got it? And yes, the right answer is option C. Chori Chora is a town in Gorakhpur district of Uttar Pradesh. On 4th February, याद रख लेना डेट, इसको important है. On 4th February 1922, a mob of peasants participating in non-cooperation movement clashed with police, and set the police station that killed 22 policemen and 3 civilians. Got it? तो 4th February 1922 को चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था. यूपी का एक गांव का नाम था गोरखपुर टाउन में, और उसका नाम था चोरी चोरा. वहाँ पे हुआ था, और जहाँ पे 22 वाइस पुलिसमैन को जिंदा जलाया गया था. तो इसीलिए फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ किया था. द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिगीम ऑफ. क्रिप्स मिशन आया, आपको पता है 1942 में आया. तो उस टाइम कौन थे वाइस राय इंडिया के? लॉर्ड लिलिंथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड माउंटबेटन. क्रिप्स मिशन इंडिया किसके रिगीम में आया था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. क्रिप्स मिशन कैम्प टू इंडिया कब आया? इन मार्च 1942 टू सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स. क्योंकि ब्रिटिश वॉर ने खुद ही वॉर में अनाउंस किया था खुद को, तो ये चाहते थे इंडियन सपोर्ट करे. दिस मिशन वॉज सॉट टू निगोशिएट एन एग्रीमेंट विद इंडियन लीडर्स. इट वॉज हेडेड बाय, कौन हेड कर रहा था इसको? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसको हेड कर रहा था. लॉर्ड लिलिंथगो वॉज द वाइस रॉय एंड व्हेन द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया. तो लॉर्ड लिलिंथगो जो है उस टाइम पे वाइस रॉय थे जब क्रिप्स मिशन इंडिया आया. Got it? जलियांवाला बाग मैसेकर occurred on. जलियांवाला बाग जो किस्सा था वो कब हुआ था? 15th January 1919, 13th April 1919, 14th August 1919, 3 July 1919. And yes, the right answer is जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? Option B is the right answer. Jallianwala Bagh massacre, Jallianwala also spelled Jallianwala, also called massacre of Amritsar, incident on April 13, 1919, in which British troops fired on a large crowd of unarmed Indians in an open space known as Jallianwala Bagh in Amritsar in the Punjab region, now in Punjab state of India. Got it? Burma was separated from India in. Burma को separate कब किया गया इंडिया से?
1932, 1935, 1937, 1939. एंड यस, बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ये हमने कल भी किया था, ऑप्शन सी 1937 में. द ब्रिटिश सेपरेटेड बर्मा प्रोविंस फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया इन 1937 एंड ग्रांटेड द कॉलोनी a new constitution calling for a truly elected assembly with many powers given to the Burmese, but this proved to be a divisive issue as some Burmese felt that this was a ploy to exclude them from any further Indian reforms. Got it? Okay. Moving to another question. Which one of the following suggested the reconstitution of the Viceroy's Executive Council in which all the portfolios including that of war members were to be held by the Indian leaders? तो ये किसने सजेस्ट किया था कि हम वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसमें जो पोर्टफोलियो है वो इंडियन मेंबर्स को देंगे, इवन वॉर मेंबर्स का जो पोर्टफोलियो है इंक्लूडिंग दैट ऑफ वॉर मेंबर्स वर टू बी हेल्ड बाय द इंडियन लीडर्स. Cabinet Mission, Cripps Proposal, Shimla Conference, Simon Commission. And yes, the right answer is option C. जो देखो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी. क्रिप्स प्रपोजल आया था मार्च 1942 में. शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी जुलाई 1945 में. साइमन कमीशन आया था 1927. ठीक है, तो आपको डेट्स पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है इन केस ऑफ हिस्ट्री. Got it? So option C here is the right answer. In June 1945, Viceroy June 1945 में हुआ था शिमला कॉन्फ्रेंस. वाइसरॉय कौन था? वाइसरॉय लॉर्ड वेवल in Shimla. It is also known as Wavell Plan. The Shimla Conference of 1945 was a meeting between Viceroy of India Lord Wavell and the major political leaders of British India at the Regal Lodge in Shimla. तो शिमला में मिले थे. लॉर्ड वेवल उस टाइम पे वाइसरॉय था. जून 1945 में प्रिजनर्स में जो भी इंडियन लीडर्स हैं उनको भी छोड़ा गया था उस टाइम पे. Which of the following factors influenced the British to transfer power to the Indians? The Indian armed forces could no longer be relied upon for their loyalty to the British. Revolutionary activities had affected law and order system. Large-scale labor unrest and hostile public mood. The Second World War had weakened British economically and politically. Choose the right answer. कौन से factors ने influence किया Britishers को कि वो transfer करें power Indians की ओर? And option D is the right answer. Second World War had weakened British economically and politically. Got it? Okay, moving to another question. Militant nationalism found expression for the first time on a large scale in the movement against non-cooperation movement, Optional Secrets Act, Partition of Bengal, Rollout Act agitation. कब militant nationalism जो है सबसे ज़्यादा उनको मौका मिला express करने का? And yes, the right answer is option B. The Optional Secrets Act 1923 is India's anti-espionage जो अभी भी इंडिया में चल रहा था. रिसेंटली उसमें कुछ चेंजेस लाई गई. It states that actions which involve helping an enemy state against India are strongly condemned. It also states that one cannot approach, inspect or even pass over a prohibited government site or area. तो ऑप्शनल सीक्रेट्स के खिलाफ एक्ट जो था उसके खिलाफ इन्होंने एक्सप्रेस किया रेवोल्यूशनरीज ने. लेकिन आप इसका डेट चेक करना कि ये इसी साल में आया था. आई थिंक यस इट इज़ राइट, 1923 में ही आया था. Got it? During the Indian freedom struggle, who of the following raised an army called Free Indian Legion? सुभाष चंद्र बोस, वी डी सावरकर, लाला हरदयाल, राज बिहारी बोस. तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसके दौरान किसने रेज की आर्मी जिसको बोला जाता था फ्री इंडियन लेजन? एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. Indian independence leader Subhash Chandra Bose initiated the Legion's formation as part of his efforts to win India's independence by waging war against Britain. When he came to Berlin in 1941 seeking German aid, the Indian Legion, officially the Free Indian Legion, was a military unit raised during the Second World War, initially as part of the German army and later the Waffen-SS from August 1944. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी एक यूनिट आर्मी का. If a God were to tolerate untouchability, I would not recognize him God at all. अगर कोई ऐसा मतलब अगर गॉड मानेगा कि अनटचेबिलिटी सही है तो मैं मानूंगा ही नहीं वो गॉड है. तो ये किसने बोला था? These words were spoken by गांधी, तिलक, विवेकानंदा, गोखले. किसने बोला था ये स्टेटमेंट किसने दिया था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. इफ अ गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम ए गॉड एट ऑल. दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय एम के गांधी. ये किसने बोला? गांधी जी ने.
ठीक है, गांधी जी ने भी बहुत आवाज उठाई थी अनटचेबल्स के खिलाफ. द क्रिप्स मिशन फेल्ड बिकॉज मेनली बिकॉज क्रिप्स मिशन जो मार्च 1942 में आया था वो मेनली क्यों फेल हुआ? There was nothing said about a constitution making body for India. The Congress was no longer willing to trust the British. It offered a clear program for partitioning India. The Congress demand for effective transfer of power to Indians was not met. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्यों मेनली फेल हुआ क्रिप्स मिशन? So the options are here. क्रिप्स मिशन फेल क्यों हुआ मेनली? ठीक है, देयर वॉज नथिंग सेड अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी फॉर इंडिया. द कांग्रेस वॉज नो लॉन्गर विलिंग टू ट्रस्ट द ब्रिटिश. इट ऑफर्ड अ क्लियर प्रोग्राम फॉर पार्टीशनिंग इंडिया. द कांग्रेस डिमांडेड फॉर इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस was not met. So the right answer here is option D. The Congress demand for effective transfer of power to Indians was not met. कांग्रेस चाहता था कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो पहले, कुछ तो वो नहीं जो है मान रहे थे. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. द क्रिप्स मिशन फेल्ड मेनली बिकॉज द कांग्रेस डिमांड फॉर इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस वाज नॉट मेट. The Cripps mission was failed attempt in late March 1942 by the British government to secure full Indian cooperation and support for their efforts in World War II. So moving to next question, which revolutionary died after a 64-day fast in jail? डिमांडिंग ट्रीटमेंट नॉट एज क्रिमिनल्स बट एज पोलिटिकल प्रिजनर्स. उन्होंने बोला था कि हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हाँ हम पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तो उसी हिसाब से हमारे साथ ट्रीट किया जाए, ना कि क्रिमिनल्स की तरह. तो 64 डेज तक उन्हें कुछ नहीं खाया था, वो फास्ट पे थे और फिर उनकी डेथ हुई जेल में. ऑप्शंस आर पुलिन दास, जतिन दास, अनंता गुप्ता, बोथ ए एंड बी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जतिन दास था उनका नाम. एंड Jatindra Nath Das breathed his last on September 13, 1929 after a 63-day long fast for protecting political prisoners from injustice. Only 25 years old at the time, Das had undertaken his hunger strike. This hunger strike, along with the Shahid Bhagat Singh and other imprisoned freedom fighters in Lahore Central Jail. Got it? Okay. When Gandhiji was arrested during salt satyagraha, who took his place as the leader of movement? जब साल्ट सत्याग्रह के टाइम गांधी जी को अरेस्ट किया गया था तो उनकी जगह पे लीडरशिप किसने ले ली? अबुल कलाम आजाद, अब्बास त्याबजी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू. एंड यस, द राइट आंसर इज शाबाश, ऑप्शन बी. Dandi March or Salt Satyagraha was a major non-violent protest action in India led by Mahatma Gandhi in March-April 1930. When Gandhiji was arrested during Salt Satyagraha, Abbas Tyabji took his place as a leader of movement. Abbas Tyabji was an Indian freedom fighter from Gujarat and an associate of Mahatma Gandhi. वो associate भी थे महात्मा गांधी के और गुजरात से belong करते थे. Consider the following statement and identify with the help of the code given below the viceroy who made the statement and when. In my belief, Congress is tottering to its fall. One of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. क्या ये लॉर्ड मिंटू ने बोला था while addressing the Muslim delegation which met him at Shimla in 1906? क्या ये लॉर्ड डुफरिन ने बोला था during the farewell speech at Calcutta? Lord Curzon while announcing the partition of Bengal? Lord Curzon in a letter to the Secretary of State in 1900? तो किसने बोला था? So right answer is option D. Lord Curzon was the Viceroy of India in 1898. He was mainly famous for the partition of Bengal. Lord Curzon के टाइम ही partition of Bengal हुआ था, यूनिवर्सिटी एक्ट आया था और ऑप्शनल सीक्रेट्स एक्ट आया था. He was very much keen to suppress नहीं ऑप्शनल सीक्रेट्स एक्ट उस टाइम नहीं आया था, मोनूमेंट्स एक्ट आया था उस टाइम. He was very much keen to suppress the Indian national movement. He made the statement, in my belief, Congress is tottering to its fall and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. Moving to another question. The Royal Indian Navy ratings revolted in February 1946 to protest against the firing on some rating of the Hemis Talwar, the government's suppression of Congress activities, the punishment meted out to the National Army officials, the treatment meted out to them. सो रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट जो हुआ था वो फरवरी 1946 में हुआ था, किसके खिलाफ? ऑप्शन डी. द रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स रिवोल्टेड इन फरवरी 1946 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू देम. द म्यूटिनी स्टार्टेड एज अ स्ट्राइक बाय द रेटिंग्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्डशिप्स रिगार्डिंग पे, फूड एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. गॉट इट? ओके. The Indian National Army trials took place in the
पार्लियामेंट हाउस दिल्ली, अहमदनगर फोर्ट, रेड फोर्ट दिल्ली, ओल्ड सेक्रेटरी दिल्ली. And yes, the International Army trials took place in the option C, Red Fort Delhi. In November 1945, the International Army trials began at Red Fort. S.N. Khan, P.A.K. Sehgal, D.S. Dillon, the first three senior International Army officers became symbols of India fighting for her independence. Protests against the trials took place, and in February and March 1946, the Royal Indian Navy and Royal Indian Air Force mutinied. ठीक है, तो रेड फोर्ट दिल्ली में इनका ट्रायल हुआ. ठीक है, गॉट इट. सो दिस इज़ द एंड ऑफ सेशन टुडे. तो ये पार्ट 3 था. इंशाल्लाह पार्ट 4 और पार्ट 5, पार्ट 6 ये मैं लाऊंगी. और आप कंटिन्यू जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आपका जो है सारा याद हुआ होगा मॉडर्न हिस्ट्री या बाकी भी कंपोनेंट्स जिनकी हम रिवीजन सीरीज करें MCQs के थ्रू. तो बाकी लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. मैं खुद कमेंट्स को मॉनिटर करती हूँ. एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.